गिव मी लाइक 3-4 पॉइंटर्स कि वैल्यू सिस्टम में क्या चीज़ देखो. Okay, value system can be a huge aspect. Let's just say अगर मेरे को buckets बनाने हैं, आज के दिन पे फाइनेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू सिस्टम हो गया है. एक्सपेंडिचर पैटर्न, सेविंग पैटर्न. आई हैव अ कपल हु इज टॉकिंग अबाउट वन ऑफ देम थिंग्स कि कमा रहे हो तो जियो साथ में, और एक है कि नहीं भाई एकदम Save सेव करो. करके जियो. तो दिस इज ऑल्सो वैल्यू सिस्टम कॉन्फ्लिक्ट, अ बिग वन. Yeah. So what is your financial management and outlook towards finances and money? That could be one of the things, because very relevant to today's people, both are earning. Second one could be simply the social aspect of our life. Okay. What are the kind of people we want to hang out with? What are the kind of events? What are the kind of, not events, but मतलब कि कितना outing हमको चलेगा, क्या क्या तरह की activities and outing are we okay with? Like for example, a lot of people are not okay with social drinking also in their partners. So कभी कभी हम टॉलरेट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, वरना वो जाके आगे में एक इशू बन सकता है. सो सोशल लाइफ, इट कैन बी अबाउट द इमीडिएट डे टू डे लाइफ में हाउ आर वी डिवाइडिंग आवर रोल्स एंड टाइम्स, कि आप कितना मुझे, for example, my role is certain by the family or the society. But what does he think about that? Like gender roles. I'm talking about these things which have sparked a lot of controversies also, but they are important bits because काफ़ी awareness आ गया है यहाँ पर. आज मैं काम भी कर रही हूँ घर का, मैं शायद बाहर जॉब भी कर रही हूँ, मेरा करियर भी है. So what are your notions about that day to day में? How are we managing our roles and responsibilities? Where can you maybe step in for me? Where can you maybe adjust for me? The big life decisions, kids, whether we want, like I told you earlier. I think all these क्या कहते हैं, chunks of life, like even physical aspects, you know, so what are we okay with, how much are we okay with, कभी भी वो भी डिस्कस करना पड़ता है. हमारे कुछ पास्ट एक्सपीरियंसेस होंगे, ट्रॉमास होंगे. So can that be considered? Is this person sensitive enough? The emotional aspects basically. So there are these chunks. Overall अगर आप देखो कि 3-4 जगह पे अलाइन कर रहे हैं, 2-4 जगह पे ओवर टाइम अलाइनमेंट आ जाएगा. या मतलब कि there's a possibility of compatibility. 3 out of 5 things should tick mark. So, is it okay if like अगर मेरे ज़िंदगी में मेरे को 5 चीज़ें या फिर 5 एस्पेक्ट ऑफ लाइफ जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उसकी मैं लिस्ट बना लूँ? Okay. And when I meet that person, I ask value system of that person around those 5 things. And then अगर 60% भी मैच कर रहा है, it's good. Yeah, absolutely. I'm saying 60% is way too good enough, because rest develops over time. Like I said, you have to leave something to the future to unfurl. आप अभी सब नहीं, हमारा need हो गया of too much predictability, knowing too much too soon. Then you can't collect that information. That's not possible. And आपको नहीं मिलेगा 100% certainty and guarantee. In fact, even people who are into love marriage, उनको लगता है वो एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं. But just being in a relationship and living together are two very different things. Yeah, and living together, also live-in and marriage are two very different things for that matter. You know, after society's stamp, there are other things which come with it, like there's the family aspect that comes with it. Live-in में शायद आपको इतना ज़्यादा obligation या इतना ज़्यादा responsibility नहीं था. So yeah, after marriage, what all comes up, you can't even imagine. And that's where you and I were discussing before this podcast, arranged marriage or love marriage हो, वो जाके अटकता एक ही जगह पे है. 5 साल बाद पता भी नहीं चलता किसका लव मैरिज है, किसका, सब एक जैसा हो जाता है. एक जैसा, बिल्कुल वही challenges है, वही dynamics है, सबको face करना है. That's a universality of marriage. And maybe this will also help you. सब जन गुजर रहे, सब जन manage कर रहे, like majority people are managing and finding way around it. You too will. You just have to. Okay. So now we are on a stage कि चलो पसंद आ गए, हम लोग ना बोलना था तो ना बोल दिया, उससे कैसे गुजरना है वो भी बात कर ली. एंड हाँ बोल दिया, चलो नाउ द रोका एंड एवरीथिंग इज हैपनिंग. ठीक है. So any one last thing you say before saying yes to the partner? Family dynamic को कैसे देखें?